A very good morning to all of you. Welcome to the computer class. I am your computer teacher Sukriti, and students, today we are going to complete the third chapter, that is concept of memory. So students, how are you all? I hope that all of you are fine at your places. So students, it is advisable to you that you please wear masks whenever you step outside. Okay, so students, in this chapter we have already learned about many things. So first of all, we learned about like the contents of the video were memory, main memory, secondary memory, and units of memory. After that, we talked about the memory, that what is a memory. After that, we talked about the main types of memory, what are the main types of memory that we use in our computer system. After that, we talked about how does our computer store information in itself. After that, we talked about RAM. We talked about the types of RAM, that is static RAM and dynamic RAM. After that, we talked about ROM, that is read only memory. Then we talked about the difference between primary memory and secondary memory. Then we talked about the types of ROM, that is PROM, EPROM and EEPROM. So students, today we are going to continue with a new topic, that is BIOS. Okay, so what is BIOS? BIOS means basic input output system. So basically BIOS is built-in program that contains the code required to control the disk drives, display screen, keyboard functions, etc. Okay, so BIOS is placed in a ROM chip and it makes possible for a computer to boot itself. तो जो भी आपके डिस्क ड्राइव्स होती है, डिस्प्ले स्क्रीन होती है और जितने भी आपकी फंक्शनिंग होती है कीबोर्ड की, वो सब बायोस की हेल्प से होती है. एंड जो बायोस होता है वो आपकी रोम चिप के अंदर ही प्लेस होता है और उसकी हेल्प से ही आपका कंप्यूटर बूट करने में पॉसिबल होता है, आपके कंप्यूटर के लिए बूट करना. ओके, सो आफ्टर द बायोस वी हैव कैशे मेमोरी. सो कैशे मेमोरी इज़ अ वेरी क्रूशल पार्ट in a computer system. So cache memory is a fast RAM system designed to hold data recently accessed from the disk drive that the processor may need again. Okay, so basically जो आपकी कैशे मेमोरी होती है वो सब इंस्ट्रक्शंस और डेटा को होल्ड करके रखती है जो आपकी प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा बार यूज़ करना पड़ता है. और that's why cache memory is an extremely fast memory type that acts as a buffer between RAM and the CPU. Basically क्या होता है कि हमें जो भी instructions, जो frequently used instructions होती हैं वो कैशे में स्टोर रहती है. तो फर्स्टली जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कैशे में ढूंढता है, देन वो रैम, अगर वो कैशे में नहीं मिलती उसको इंस्ट्रक्शंस तो वो रैम में ढूंढता है, एंड आफ्टर दैट इट सर्चेज इन द हार्ड डिस्क ड्राइव. ओके, सो इट होल्ड्स frequently requested data and instructions so that they are immediately available to the CPU when needed. That's why the cache memory is a very important memory and it holds frequently requested data and instructions so that these are immediately provided to the CPU whenever needed. Okay, so this was about the cache memory. Okay, so after that we have CMOS. Okay, so CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor. Okay, so it is a specialized memory that contains semi-permanent vital data about the computer system's configuration. Okay, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है होती है उसका जो भी डेटा होता है वो आपकी CMOS के अंदर प्रेजेंट होता है. विदाउट दिस डेटा द कंप्यूटर वुड नॉट बी एबल टू स्टार्ट. तो जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपका कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए वो CMOS में होती है और इस सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा के बिना आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता. सो CMOS इज़ मोर परमानेंट देन RAM एंड लेस परमानेंट देन ROM. तो अगर आपको कभी CMOS को प्लेस करना पड़े तो RAM will be on the left hand side, then CMOS will come, and then on the right hand side ROM will come. So that's why it is called that CMOS is more permanent than RAM and but less permanent than ROM. Okay, CMOS requires very little power to retain its contents. So it consumes very little power and through that power it can retain its contents. Okay, the chip is powered by a battery. Okay, so it can be updated by running a special utility program available through the operating system. So we have different types of CMOS. Like we can update the CMOS by using different applications, and these can also be updated through the operating system. Okay, so after that
It is basically a battery powered device which holds the data, time and system setup parameters. तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हमारी वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर की, तो वो हमारा CMOS होल्ड करके रखता है. और CMOS क्या है? एक बैटरी पावर्ड डिवाइस है जो कि आपकी डेट, टाइम और जो भी आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस होती हैं उनको अपने अंदर रखता है. Okay, so after the CMOS I have secondary memory. Okay, what is secondary memory? So already we have discussed that secondary memory is also known as permanent memory. हमारा जो भी डेटा होता है वो secondary memory में permanently stored रहता है तब तक जब तक हम उसको खुद से delete नहीं कर देते. So storage devices are used to store large amount of data permanently, ट्रीटेड एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो हम सेकेंडरी मेमोरी को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कह देते हैं. वो क्यों कहते हैं हम? ओके, सो लेट्स स्टडी. दे फंक्शन एज इनपुट डिवाइसेस व्हेन डेटा इज़ ट्रांसफर टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग. तो जब भी हमें डेटा को प्रोसेस करना होता है, ठीक है, तो जब भी हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो वो एज एन इनपुट डिवाइस कहलाता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. और जब भी हमें कोई आउटपुट मिलता है और वो आउटपुट जा करके हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होता है तब हम उसको आउटपुट डिवाइस बोल देते हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ called as input output devices. And as you know that secondary memory enables the user to save the data for future use. तो जब आप अपने डेटा को संभाल कर रखेंगे, परमानेंटली स्टोर करके रखेंगे, तो ऑब्वियसली यू कैन यूज़ दैट डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज़ एंड यू कैन यूज़ इट इन फ्यूचर. ओके, सो एज ऑल ऑफ यू नो दैट सेकेंडरी मेमोरी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव. देन इन द अर्लियर टाइम्स वी यूज्ड floppy disk as a secondary memory device or storage device. Then you have pen drive, you have optical disk. Okay, so in the next presentation I am showing you different types of secondary storage devices. So here on the left hand side you can see the hard disk drive. So this hard disk drive is of 1 terabyte and it is provided by Western Digital, and Western Digital is a firm which basically provides you all these type of devices. Okay, then on the right hand side you can see the optical discs. So in the optical discs, like we have already studied, here we have CD, that is compact disc, we have DVD, and then we have the Blu-ray disc. Okay, and at the bottom you can see the pen drive. Okay, so this is the pen drive which is provided by the company SanDisk, and now in the market you have different types of pen drives which have different storage capacities. Okay students, so now we have memory units. So this is a very important topic in this chapter. So what are memory units? तो memory units से हम क्या समझते हैं? memory units basically वो units होती है जो हमारी memory को define करती है कि हमारी जो storage capacity है किसी भी device की वो कितनी है. Okay, so 1 bit is short for binary digit. So all of you know that जो हमारी 1 bit होती है that is the smallest unit of data. Okay, so that is the smallest unit of data a computer can hold. Okay, so and also you know that कि जो भी हम एक कैरेक्टर हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं उसके लिए हमारा कंप्यूटर मिनिमम 1 बाइट को ऑक्यूपाई करता है, वन बाइट का स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ओके, सो हेयर वी हैव डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स. ओके, सो 1 बाइट इज शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट. सो कभी आपसे कोई पूछे कि 1 बिट मीन्स व्हाट, सो 1 बिट मीन्स वन बाइनरी डिजिट. ओके, सो 1 बाइट इज इक्वलेंट टू 8 बिट्स. आफ्टर 1 बाइट वी हैव 1 kilobyte. So 1 kilobyte is equivalent to 1024 bytes. After 1 kilobyte we have 1 megabyte, and 1 megabyte is equivalent to 1024 kilobyte. Okay, so 1024 kilobytes means what? 1024 kilobytes means 1024 into 1024 bytes. So you can say 1 megabyte is equivalent to 1024 into 1024 bytes. Okay, now we have 1 gigabyte. So 1 gigabyte is equivalent to 1024 MBs, or you can say 1024 into 1024 into 1024 bytes. Okay, so after that we have 1 terabyte. So 1 terabyte is equivalent to 1024 GB, or you can say 1024 gigabytes. So 1024 gigabytes when I am saying, so that means it is equivalent to 1024 multiplied by 1024 multiplied by 1024 into 1024 means 1024
4 to the power 4, so that means it contains this much of bytes. So students, this was all regarding your chapter, that is concept of memory. So in this chapter we have read many things regarding the memory. Okay, so that's all for today. Thank you so much.